इस बार iPhone 13 आपको 4 साइजेस में देखने को मिल सकते हैं, जो कि सिमिलर हो सकता है iPhone 12 लाइनअप के साथ। एक स्मॉलर नॉच देखने को मिलेगा, 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले, कैमरा में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स है विद A15 बायोनिक चिपसेट इन्वॉल्व्ड इन दिस डिवाइस। एंड गेस व्हाट, दिस इज द मोस्ट पावरफुल डिवाइस क्लेम्ड बाय एप्पल। Alright guys, so in the previous video you guys already seen that the Google Pixel 6 Pro is improving in the top of the line. Along with that, the iPhone 13 series are getting so much strong rumors. This time the iPhone 13 may superestimate your needs, and trust me, you are going to be incredibly shocked by this product launch of iPhone. So this time it is planning to have 3 and 4 sizes of displays that will be similar to iPhone 12 lineup. This time in the iPhone 13 you guys will see a smaller notch, and it is also claiming that the most powerful chipset has been used in this iPhone 13 device. In the iPhone 13 lineup you can see 2 cameras lined up diagonally with each other with different shades of the smartphone. It is also claiming to have a rose gold shade that may attract a whole different targeted audience customer group. So that's also crazy about the colors, and apart from the colors, it is also implementing the strongest chipset ever in an iPhone device. So let me tell you, it is also not disappointing us in the display section. 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे कैमरा इम्प्रूवमेंट्स भी हुए हैं, और साथ में ये आपको 5G देखने को भी मिल जाता है। तो और प्रो मैक्स की बात करें तो 6.9 इंचेस का आप लोगों को देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पे iOS 15 का सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही क्रेजी डील होने वाला है। एंड गेस व्हाट, दिस टाइम Apple is also providing their Touch ID on screen for the first time. Apart from that, processor, here you will get the A15 Bionic chipset that is claimed to be the powerful processor till date, and due to its production, the launch of this smartphone may delay a slight. So Touch ID, as I told you guys, under display fingerprint, here you can use your Touch ID, and it's going to be super crazy. Along with that, wireless charging, as always in the previous models, it is available here with the 25-watt MagSafe charging, and it's claiming that 50% charge will be done in 30 minutes. So it's crazy for an iPhone, right? 12 megapixel front camera, this is a good upgrade. As you all know that in the previous models it provided 12 megapixel back camera, but this time they are providing front camera, and guess what sensor they are using? I will love to know your comments. यार उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के शेड्स देखने को मिलते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक अच्छा खासा ऑडियंस को टारगेट करता है। मेरे को लग रहा है गूगल पिक्सल 6 के साथ साथ आईफोन भी एक बहुत ही करारी टक्कर देने वाला है। So what do you guys think? Tell me. And one more thing, it's claiming that वीडियो में आपको पोर्ट्रेट मोड मिलेगा, यानी कि आप लोग गेस कर सकते हो बोके इफेक्ट जो होता है वो एकदम टॉप नॉच आप लोगों को देखने को मिल सकता है। कैमरा भी यहाँ का इम्प्रूव हुआ है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हुआ है, और आईफोन इसको बोल रहा है द मोस्ट पावरफुल आईफोन इज़ येट टू कम। आप लोग इस मॉन्स्टर मशीन को लेके कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट में बताना। नए हो चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.